अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच आपके ज्वाइन करने के लिए। सो एज हमारे ये सेशन जो है रेगुलर होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन आज हमारे साथ कुछ काफ़ी ज़्यादा नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। तो हम क्या ये BOTP क्या है, हमारे कोर्सेज किस तरह से हैं और हमारा मिशन क्या है। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे वो जो मैम फरहाना उनसे कि हमें थोड़ा सा BOTP के बारे में बता दें, हमारे नए जो हमारे साथ जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया उनके लिए। ओवर टू यू मैम फरहाना। Yes, hi everyone for taking all the time from your day for attending this session. So inshallah, so let me give an introduction on voice of the people. So this training sessions jo ho rahi hai, it's under the umbrella of voice of the people. So voice of the people was a project which began after October the 7th. October 7th के बाद ये शुरू हुआ, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को अवेयर कराएं कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में इतने सारे मसले मसाइल क्यों हैं, और इसके लिए हम सारे लोग इकट्ठा होकर इसको सही रास्ते पे वापस ट्रैक पे लाएं. So that is the whole purpose of Voice of the People. And as a result of Voice of the People, to be able to do that work, we ourselves need to be very very strong. And इसलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है फाइंड योर ट्रूथ. और फाइंड योर ट्रूथ में आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी को बड़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी एट्रीब्यूट्स, आपकी मोरालिटी, कि जहाँ जहाँ पे आपको क्वेश्चंस हैं, इश्यूज हैं, आपकी रिलेशनशिप्स में जो जो चीज़ें आपको दूर रख रही हैं कम्युनिटी में इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने में, उस सारी गैप्स को फिल कर रहे हैं, या उस सारे मसले मसाइल को हम एक वन बाय वन वी वांट टू रिजॉल्व. So that is what the Find Your Truth is all about. And as a part of this, one of the important हमारी जो चैलेंज है वो हमारी रिलेशनशिप्स हैं, हमारे इमोशनल इश्यूज हैं जो हमें प्रिवेंट करते हैं आगे बड़े काम करने में. So building relationships and conflict resolution is an important series which we are doing. आज इसका 5th session है, so please go ahead and listen for yourself and benefit from it, inshallah. Over to you, sister. Thank you, Sister Farhana. So, Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining us and making time to come and listen to this workshop. It's very much, hum sabka ye, we all want to have good relationships, or relationships ke baghair kisi ki zindagi is not without relationships. So the whole point is कि आप अपने full potential पे पहुंचे, आप अपने goals पे successful हो. And how can you do that? That is what we are trying to do. So what I'm going to do is कि थोड़ी सी revision होगी on the previous areas, because some new people are there. I don't know आप लोगों ने videos watch किए हैं या नहीं किए हैं. But all the same, I will go through it, but very briefly. अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो please know कि वहाँ पे videos भी लगे हुए हैं, और course में भी ये चीज़ें आपको step by step ले जाएंगे. So don't worry about it. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, inshallah, we will make it possible for you to apply the material. Main चीज़ है कि आप अपनी life में इसको apply करें. It's not just about listening, right? So that is what we are aiming for. So let's see. You can see my screen, yes? My screen is Yes, open? yeah. Okay, good. All right. Okay, so this was our first talk. जो पहला हमने talk किया, उसमें हमने क्या cover किया? हमने कहा कि relationships and conflicts क्यों important है? We looked at it. Why are they so important? और एक प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन किया जाता है. फिर जिंदगी में इख्तलाफ होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हाउ डू वी डील विद इट. हर एक का अपना तरीका है डील करने का. एंड वी आइडेंटिफाइड द 5 ways जिससे आप डील कर रहे हैं, एंड विच इज़ द बेस्ट वे, और कौन से हार्मफुल हैं वेज कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के. एंड देन वी वेंट ऑन टू सी के कॉन्फ्लिक्ट की डिग्रीज हैं.
they can be either very slight conflict, can be a very high level of conflict. Sister Shazia, can we mute? So levels of conflict can vary, and आपको level of conflict को पहचानना है कि किस degree पे है, तो उसको जब आप degree को पहचानेंगे, then only you will know कि इसकी handling अब क्या है. And then we came to levels of understanding in a relationship. आप क्या चाह रहे हैं? Different levels हैं understanding की. आप को अपने दोस्त के साथ एक लेवल का रिलेशनशिप चाहिए, आपको अपने बच्चों के साथ दूसरे का चाहिए, अपने स्पाउस के साथ कुछ और चाहिए. सो वो डिफाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज व्हाट वी कवर्ड इन द फर्स्ट two talks, and I'm going to briefly go over these points. So पहला था कि relationship क्यों important है. Relationship is a connection with anybody. It could be with yourself or with a person or with a group or with Allah Ta'ala. The relationship is there. So इसकी क्यों importance है, and self के साथ आपकी क्या relationship है. You should be asking that question कि मेरी अपने साथ कैसा relationship है. So इसको समझने के लिए it's a very difficult question for some people to answer, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद को पूरी तरह पहचाना ही नहीं है. And this is what our first course is about, know yourself. So you get to know the different parts of you, और आप कौन है. You got your emotion, you got your mind, you got your body, you got your cow, and then you got a soul. Well, which one is it? And which one is operating when? So self-awareness जो है वो बहुत ज़रूरी है in order to even have a good relationship with yourself. So that course would be absolutely necessary. And आपका relationship दूसरों से उतना ही पक्का और अच्छा होगा जितना आपका अपने साथ relationship अच्छा है, right? So you have to develop that relationship with yourself, और उससे आप spiritually grow करते हैं, you reach other heights. And there's no relationship that can reach spiritual heights without having a relationship with Allah Ta'ala. So that is the area which we take you through in the courses. And inshallah, through doing that, you will gain that relationship and strengthen that bond with Allah Ta'ala as you go through the different courses. So relationship में अगर आप देख रहे हैं, build कर रहे हैं, तो दूसरों के साथ, तो you understand their position, you can communicate better, you have stronger bonds with those people. आप problem solving को ज़्यादा, you can do that more if you have, you have built a relationship with people. You are more able to solve the problems घर में, in the workplace, in society, in the world. You can carry that your force through, and you are able to be more effective if you know yourself and you have a better relationship with other people. So a positive environment भी हम पैदा कर सकते हैं if we have the technology for building relationships. So that was the first part, and then we looked at the problem होता क्या है. Is there any life? आप क्या कहेंगे? Is there any life without problems? किसी की जिंदगी में ऐसा कोई बंदा होगा दुनिया में जिसके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं? What do you think? Is there any, what do you say? Would be no. Okay. Yeah, there's no, life is about problems. एक जिद्दोजहद है, एक striving है. You will have problems. So the idea isn't कि problem को गायब कर देना है. You choose your problems. Choose the right problem. Now, what is a problem? क्या है? एक मसले का definition क्या है? तो उस definition को देखते हैं कि आपकी you define a problem is कि आप क्या चाहते हो, आपकी desired state क्या है किसी चीज की. Look at, if I say, give a simple example, my kitchen key, right? If I say, I want my kitchen to be neat and tidy, everything in the proper place, तो वो मेरी desired state होगी, right? This is what I want. And then
what is its current state? It's very messy. Everything's thrown everywhere. The table's dirty, the floor is dirty, the chairs are not in good condition. तो अब मैं कहूँगी कि मेरा दोनों में फर्क है. The state जो अभी है और जो मैं चाह रही हूँ उनमें फर्क है. So that's why I can say that there is a problem. Right? So in a relationship आप कैसे कहेंगे कि there's a problem? That if you want it to be a certain way, आपको इतनी, you want with your child, let's say, you want a really good relationship where they share things with you, where you are able to talk to them, where you don't lose your temper when they do something. So that's your desired state of a relationship with your child. लेकिन अभी कैसा है? You have to look at that and admit to yourself कि ऐसा नहीं है, अगर नहीं है तो आप admit करें कि okay, it has some issues in it, I lose my temper, I don't listen, I react too fast, or he's very rude to me, or she's very rude to me, and, she jumps to conclusions, she doesn't listen to me, whatever. तो जितना आप उस अभी वाली condition को समझ जाएंगे, you will be more in power to correct the situation towards a desired solution, right? So अगर आप अभी वाली situation को पूरी तरह समझ लेंगे तो जो आप चाह रहे हैं आप उस तरफ उस चीज को ले जा सकते हैं फिर, right? So that is what a problem is. So let's does everyone understand what I've covered so far? थोड़ा सा quiz करके देखें आपको कितना समझ आया है. Should we do that? Would you like to do that? Yeah. Okay, let's see. Okay. So tell me, Sister Shazia, if you can see it. Yes. Okay. Yeah. So this is the first quiz, and you have to say what is the purpose of relationship. जो हमने शुरू में cover किया. What do you think is the purpose is of relationship? You can have many answers in this one. एक answer नहीं है. आपको जो सही लगता है, self awareness है, problem solving है, अपने goals को reach करना है. The purpose of relationship, making others wrong उसका मकसद है, या being the one in power by finding others' weaknesses. कौन सी चीज है जो purpose of relationships को आप कहेंगे? So we've got 22 people and 7 people have answered. Let's get everything moving faster. So yeah, good. You didn't get the quiz. You don't understand the quiz, Marjabeen? Is that what you're saying? What is the purpose of relationship? That is what the question is. We covered it in... Can you not see it on your screen? I cannot see the quiz. Why some people cannot see? Some people can't see. आप फोन पे हैं इस वजह से है या क्या? ये अगर फोन पे है ना सिस्टर तो इनको चैट्स में जाना पड़ेगा, जहाँ चैट होती है ना, तो क्लिक करेंगी ना तो फिर उधर आ गया ना, जब बातें हो रही है, टेक्स्ट हो रहे हैं. आपको बता रही हैं sister how to do it. Can you do it that way, Sister Javeria? QR code को share करूँगा. I don't know much about this thing. No. Okay, 14 out of 20. Did it resolve, Sister Javeria, or not? It was Majabin, and Julia said no. Not quite sure how to do that. Just sister, फिर से समझाएंगे कैसे देखेंगे लोग? Sister Smina, आप बताएंगे दोबारा से please? जी, जहाँ पे चैट मतलब टेक्स्ट मैसेज हम कर रहे हैं ना, आ रहे हैं ना आपके ऊपर, तो चैट को क्लिक करेंगे ना तो हो सकता है आप नीचे और आ रहे हैं ना तो ऊपर थोड़ा जाएंगे ना तो वो फिर आपको आ जाएगा ना वो सारा जो उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, तो फिर उधर बस वो क्लिक करके ना आप सबमिट कर दें. अगर इनका शायद थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करना पड़ेगा ना, ऊपर हो जाएगा ना इनका. Thank you, Sister Smina.
So as I was saying, you touch the quiz word and the quiz is seen then. You touch the quiz word. Okay, let's move on then. इसका क्या result आपको क्या the It's- first three seemed right, right? The first three answers seemed right. Was that okay? Is this quiz still showing or not? It is. I can't see it now. Okay, share results. Is it gone? Share results, you can see it, right? And you got the people who have answered correctly, okay? So now we're moving on to the next quiz. So the next one is about what is the problem? Is it showing, sister? Is it? Yeah, that's what I was going to ask. It's not even showing on my screen. No, it's not showing. No. Okay, now it should show. Is it showing? Yes. Yes. So the definition of a problem, what is a problem? That was so quick. Yeah. परसीव स्टेट का मतलब जो अभी है स्टेट, जो अभी है और डिजायर्ड है जो आप चाह रहे हैं, जो आप अभी देख रहे हैं उसे परसीव स्टेट बोलेंगे. Yeah, I'm explaining the word perceived. तो अगर perceived state जो आप देख रहे हैं और जो चाह रहे हैं वो एक जैसी होगी तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? Right? Let's go over the first one. I don't know the perceived state. आपको अपनी if you look at a problem of kitchen का जो problem दिया था, मुझे पता ही नहीं है कि अभी इस kitchen की क्या हालत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो इस तरह का हो. तो problem define हुआ कि नहीं? You can't define a problem if you don't know कि अभी की condition क्या है और जो condition आप चाह रहे हैं. Right? You need to know both of them. So 1 भी out हो जाता है, 2 भी out हो जाता है. 3 में जब वो मैच कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि यू हैव बोथ ऑफ देम. और लास्ट वाला ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट वन. डज दैट मेक सेंस? ओके, you can see the results. Yes, Yes. Yeah. Okay. And another thing, सिस्टर अजरा बता रही है कि एंड पे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये क्विज शो होगा. या जिन लोगों को क्विज नहीं मिल रहा है उनके पास ऑप्शन होगा मोर का. मोर पे जाएं तो आपको ये क्विज का ऑप्शन वहां पे मिलेगा. यस प्लीज करें. Okay. All right, so these two things we are now clear on, and we move on to the next part now, जो है कि हम किस तरह से, how do we deal with conflict? Conflict का मतलब क्या है? When there's some kind of disagreement between people or with ourselves even, it's a conflict, a situation of conflict, right? तो लोग क्या करते हैं, किस तरह से आप डील करते हैं, मैं डील करती हूँ, एक तरीका है कि उसको बिल्कुल ही अवॉइड करो. उसको देखो ही नहीं, छोड़ ही दो.
just नजरअंदाज कर लो. And the other way is to smooth it over. तो उस होगा कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ. You know, you're looking at it, you admit it's there, but you make nothing out of it. कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा. और तीसरा तरीका है कि आर्ग्यूमेंट है, दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो एक बंदा फोर्सफुली कह रहा है कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही सही हूं, आप गलत. एंड द फोर्थ वे इज टू कॉम्प्रोमाइज. आप भी मेरे और आप में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो मैं थोड़ा सा गिव अप करती हूँ, आप थोड़ा सा गिव अप करते हैं, एंड देन वी सेटल ऑन समथिंग. And the final way is where you actually, both of you try to come up, be creative, so that the problem is solved to both your satisfaction. And the best way to do it is the last one. क्योंकि आप कोई भी और तरीका निकालेंगे, जैसे अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट में आपको क्या क्या आप देख रहे हैं, आपको किसका कंसर्न है, ना आप अपना फायदा देख रहे हैं ना दूसरे बंदे का सोच रहे हैं. यू गॉट वेरी वेरी लो कन्फ्रंट, यानी आप सामना ही नहीं कर रहे इशू का. तो ना आपको अपने में इंटरेस्ट है कि आपके लिए सही हो, ना आपको इंटरेस्ट है कि दूसरे के लिए सही हो. तो यू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट. एंड इफ यू स्मूथ इट ओवर, यानी आप दूसरे को प्लीज कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं, एंड यू आर फॉरगेटिंग अबाउट योरसेल्फ, देन यू हैव वेरी लो कंसर्न फॉर योरसेल्फ, and you have a very high concern for them, or you just don't want the argument. So वो उसमें आप इस तरह से जाएंगे, and it won't be long lasting. उस वक्त तो आपको लगेगा सॉल्व हो गई बात, सही हो गया, but long term it will create issues for you. And if you have a very high interest कि मैं ही जीतूं, मैं ही मेरे साथ ही सही हो ये चीजें, and you don't care about the other one, you have to win. So obviously you're going to feel that you have won, but the relationship will go down drastically with the other person. They won't share things with you. It won't be a good, solid relationship. And even when you compromise, you give in a little bit here and there, तो वो बात नहीं होती जो होनी चाहिए कि you are both caring for each other, which only happens when you're collaborating and problem solving. So that is the best way to solve any conflict that comes between you and another person. So iska quiz dekhte hain कि what you make out of this one. Is it there, Sister Farah? Not yet. Okay. It's not showing me the corner, or it's not letting me launch. Okay. Yes. You got it now? Yes. Yeah. Okay, so go ahead. In which approach of conflict is there low concern for others and high concern for self? So आपके सामने भी ways to resolve conflict लिखा है. किस अप्रोच में आपको दूसरों की परवाह नहीं है, अपनी अपनी परवाह है? Okay, any more answers? किसमें लग रहा है आपको? किसका कंसर्न अपने ऊपर बहुत ज्यादा है, और दूसरे के ऊपर है ही नहीं, right? It is showing that you are not really solving the problem because you're only thinking about yourself, right? You're only thinking about yourself. I'm showing you the result now, so we can move on. So the right one answer is win at any cost. ये इस वाले तरीके से, और इससे सही हो जाएगा, situation सही हो जाएगी between both of you. Will it be right or not? Or will there be a problem? Long-term relationship कैसा रहेगा if you have an approach of win at all costs? Will it be a good relationship? No. Okay, good. All right, it won't be a good relationship. You're right.
All right, so then we looked at what are the different levels of conflict. You know, एक दफा disagreement हो जाए तो वो उसकी भी there are a lot of levels to it कि आप की conflict कितनी serious है between yourself and the other person, or between two groups, or between two countries. It can you know, be at different levels. और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि when it's in the blue region you catch it, because that's at that point it's the easiest way, easiest time to resolve it. उसके बाद आप में इतनी डिस्टेंस आ गया है आप में और दूसरे में, और इतना इख्तलाफ आ गया है, और so many things have happened to show that आप दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर से उठ गया है. So you move into the, you know, the yellow region जहाँ पे there's dislike, distrust, and you want somebody else will need to step in to calm you both down and get that relationship going. And last वाले में तो बहुत ही severe हो गया है, and then now you're looking at legal help or a major intervention in order to bring it back. So the whole idea is to पहचान हो जाए आपको कि आपकी level of conflict इस बंदे के साथ या इस group के साथ क्या है, and what kind of intervention will it need. आप खुद उसको solve कर सकते हैं, या you will need a little bit of help, या you will need major help in order to resolve it. So again, this we covered this in our previous session, and you can have a look at that. The last part is assessing relationship strength. This is what जहाँ पे आपको interest है सबसे ज़्यादा. You know, this is where you are going to say कि मेरा relationship इस बंदे के साथ कैसा होना चाहिए. And that is what you know, हर एक के साथ तो आपका perfect relationship, you don't want a very close bonding with everybody. You're going to say कि भाई मुझे इस friend के साथ I need to be, I really like this person, I'm ready to share my innermost thoughts with them. मैं अपनी secrets भी इनको बता सकती हूँ, अपनी problems बना सकती हूँ. लेकिन with another friend you might say, no, I don't really want to do that, right? तो ये आपका डिसीजन है कि हर बंदे के साथ आप क्या रिलेशनशिप चाहते हैं, एंड यू शुड डिसाइड दैट फॉर योरसेल्फ. सो इट कैन बी कि आप कैन हार्डली थोड़ा बहुत ही आप चाह रहे हैं, मे बी उनकी तबीयत ऐसी है कि यू डोंट वांट टू रियली गेट टू नो देम वेरी वेल, सो आप 1 और 2 पे डिसाइड करते हैं कि उनका रिलेशन, मुझे अपना रिलेशनशिप उनके साथ 1 और 2 पे चाहिए. Or basic courtesy, and can discuss just upar wali stuff hai. Maybe you can say that, you know, with the postman, I want to have a 3 to 4 wala relationship. You know, that's like, okay, upar wala stuff ho jaye. Have some meaningful interaction, mostly transactional. Yani dealings mein aap sahi baat hai, wo aap kar sak rahe hain. Koi bhi, let's say with my neighbor, I tell him, you know, if there is anything, I need to let him know. He comes and says कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पोस्ट लेटर बॉक्स पे आप नजर रखिएगा, मेरे डस्टबिन्स को आप सामने कर दीजिएगा, मैं यहाँ नहीं हूँगा. तो थोड़ी बहुत हमारी बातचीत है. वी आर नॉट वेरी क्लोज, बट इतनी काफी है. आई एम हैप्पी विथ इट के 5 or 6 लेवल पे मेरा इनके साथ रिलेशनशिप होना चाहिए. And then there's 7 and 8 के you can share my thoughts and feel safe. Well, you know, I've chosen certain people. आप भी choose करते हैं कि भाई इस बंदे को मैं अपनी ये बात बता सकते हैं. It's my personal thing, but I can tell them. And then with very, very close relationships, you say you're committed to them, and you say that even जो आपकी weaknesses हैं या आपको you know, innermost thoughts हैं, you are quite at ease with telling them. आप उनको बता सकते हैं, and you're happy with that. You feel safe, and you feel कि आपको आप ही का भला वो चाहेंगे, and they will help you through this problem, right? So you have to see in your life जो भी लोग हैं उनके साथ आपको कैसा relationship चाहिए. You decide that, you know, with your child, with your husband, with your mother-in-law, with your mother, with your brothers, with your sisters, with your friends. You make a list and say, मुझे इस किस्म का relationship इसके साथ चाहिए. And it could be weak, it could be strong, it could be very strong. But you decide that, and then you see कि अभी कैसा है, right? अभी कैसा है. और अगर दोनों में फर्क है, so is there a problem then for you to work on? What do you think? Is there a problem then for you to work on?
अगर दोनों चीजों में फर्क है। यस, यस, यू एग्री? ये समझ आई है? इस पे कोई क्वेश्चन अभी तक जो भी मैंने किया है उसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछे। Has anybody got any questions? I was saying as well that if you have decided, you have a list of people in your life that you're connected with, आपने decide किया कि इस बंदे के साथ मुझे इस 1 और 2 का रिलेशनशिप चाहिए, इसके साथ 9 और 10 का चाहिए, इसके साथ 5 और 6 का चाहिए, इसके साथ 7 और 8 का चाहिए। Yeah? And then you see कि अभी वो है या नहीं है। अगर दोनों में फर्क है तो you have a problem. Yeah. Sister Ume Kulsum, I totally understand you want to know how to improve the relationship, लेकिन we are getting to that point जब आप problem तो identify कर लेना कि क्या चाह रहे हैं और क्या होना है। जब आपको पता होगा आप चाहते क्या हैं तो then you can target going towards that. It's very important to know कि आप उस relationship को में क्या चाह रहे हैं, क्या उसमें कमी है, कहाँ पे आपको improve करना है। That's how you define the problem. So it's very important कि आप उस पे time निकालें and define that problem जो है। Does it make sense? मैम फरहाना, मैम फरीदा, जस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेरी आपने बोला कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं ये सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बने या चले सहाबी बन जाए, तो लेकिन मैं इस टाइम पे मुझे नजर आ रहा है कि वो तो मेरा कहना भी नहीं मान रहा। तो ये दोनों सिचुएशंस जो हैं, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं परसीव करती हूँ, और जो मेरे पास है सिचुएशन, तो वो फिर इसका क्या मतलब है कि प्रॉब्लम है? जो आपने बात की ना सिस्टर शाजिया, you are trying to fix a goal of your son, and that is something that you need to study, know yourself and know your child before you firstly आपको impose तो करना ही नहीं चाहिए बच्चे के ऊपर कि उसको क्या बनना चाहिए। It really, you have to understand your child and then see what is right for him. अल्लाह ताला ने हर एक को दुनिया में भेजा है with a purpose, right? And you have to let that purpose show itself. Many times we overshadow it with our own demands on the child. So in that case, we put that child down or usko suppress kar dete. So my answer, it's not about the problem here. It's, your question is not correct in that sense. Right, okay. Does that make sense? Yes. Anybody else has a question or wants to clarify something? कोई बात करें, so I know that you're with me, you're understanding क्या हो रहा है, कोई मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है, we are going because we are going through at a pace, revision कर रहे हैं, तो I'm aware कुछ लोग नए हैं, उन्हें मुश्किल लगेगा, so अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कुलसुम बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा मैं अगर अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप, मेरे बच्चे जो हैं वो भी अंडर 10 हैं। आई हैव 4 किड्स और दे ऑल आर अंडर 10 एंड समटाइम्स मैं उनके साथ फ्रेंडशिप डेवलप करती हूँ, लेकिन आई लूज माई टेम्पर और मैं हाउस होल्ड और घर बच्चों के अंदर वो मैनेज नहीं कर पाती। फ्यू डेज, 1-2 दिन यानी कि मैं बहुत स्मूथली चलती हूँ, सब कुछ मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। और कुछ मैं फिजिकली भी कुछ अरसे से यानी कि बीमार हूँ, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पाती फ्रेंडशिप और बच्चों के सारा कुछ। उस वजह से मुझे बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब कर रही है चीज, तो उस पर जरा प्लीज मुझे थोड़ी गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। So I mean, Kusum, it's very good that you have a purpose to be an ideal parent. So you're identifying कि मैं ऐसी parent होना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसी हूँ नहीं, तो problem है, right? You're saying कि problem है, मेरी मदद करो उसमें, right?
So now the question is, okay, what are the things that you are doing that you lose control over? यही हो रहा है ना कि आप चाह रही हैं कि मैं इस तरह हूँ और after a few days you sometimes lose control over what you say or what you do or how you behave and then you feel regretful कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो अच्छा example नहीं set किया, right? तो इसको करने के लिए this is the first course जो हम चलाते हैं ना वो है control के ऊपर. It's a very short course, you can do it within hours, you know, within 1 hour हो जाता है course. तो कंट्रोल कहा जाता है, फिर अपने पार्ट्स को समझें कि व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ कंट्रोल, क्या हुआ, यू नो, एंड दैट इज योर सेकंड कोर्स, नो योरसेल्फ. तो वो आप करेंगे एंड यू नो यू हैव क्विजेस एंड असाइनमेंट्स. द क्विजेस आर वेरी इजी. आप खुद बैठ के उसको देख के यू अंडरस्टैंड इट. कोई प्रॉब्लम होता है, सिस्टर शाजिया इज ओवर देयर, शी हेल्प्स यू, आई एम हेल्पिंग यू. असाइनमेंट्स हैं, आप वो करें. सो माय रिकमेंडेशन टू यू इज that you are a parent who wants to be the best parent for your 4 children so that they follow your character, they know how to behave, they have high standards, and this is exactly how a parent should be. So उसको करने के लिए हमारी जो कोर्सेज हैं वो गैप फिल करती हैं ताकि आप उस मकसद में कामयाब. So I can't give you a snap answer here. I can say, please get on to the control course today, and we'll take you through that journey where you become a good parent that you want to be, inshallah. Does that answer it, Mikoso? Yes. Thank you. Anybody else has a question that they feel, you know, I don't want it to be heavy on data, giving you data. I want you to talk so that we can take you through this journey. कोई और चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, जो आपको समझ नहीं आई, जो अभी हमने कवर किया है, और should I move on? Is it useful जो किया है, या वो भी useful नहीं लगा आपको? Yes, you can, Aisha. Are you in the youth group or in the parent group? मैं एक थप्पड़ लगाऊं? Huh? Aisha, I'm asking Aisha Salman, parent group. Please, Sister Shazia, इनको भी आप ले ले. Anyone who is in the parent group, go to Sister Shazia. Anyone in the youth group, go to Sister Aisha. You know, and we can connect with you on that course. You can all in. Youth के लिए क्यों important है? Youth is our dream. They are going to fix our world. We are very interested. आपके बच्चे हैं, teenagers हैं. Please get them onto the course. Please get them onto the course. तो उनको अपनी self awareness होगी, and they will reach their full potential जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है. And that's what you want as a parent, and the world needs them. You know, we need true Muslims on the ground making a difference in the world. So please do जो youth है वो Sister Aisha से connect हो. कौन सी चीज़ है आज़ा जो नहीं समझ? Explain the last part of the page. Assessing relationship वाली बात पूछ रहे हो? Assessing, Sister Azwa? I want to ask one thing. You know, when you are at one in any kind of relation, like friends or job or parent or husband wife, so which thing actually defines कि I should work out at that point, या मुझे इसको लीव कर देना चाहिए और नेक्स्ट स्टेप पे जंप ऑन होना चाहिए, कि वो कौन सा एक पॉइंट होता है जो मुझे बताएगा कि अब मुझे इससे आगे क्या करना है. मीन सम टाइम आप डन हो जाते हैं अपने शायद फ्रेंडशिप में या अपनी जॉब में, तो आप कहते हैं इसको क्विट करके मैं कहीं और भाग जाता हूँ, किसी और तरफ रास्ते पे चला जाता हूँ. या सम टाइम कहते हैं कि मैं इसको नहीं ये इसको लेके आगे चलते हैं, इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं. तो वो मैं क्रूशियल पॉइंट पूछना चाहती हूँ, वो कैसे पता चलता है कि अब मुझे इसी स्टेज पे रहना है, मूव ऑन करना है या लीव कर देना है? Okay, all right, good question. So basically, the next part that we are looking at is the causes of conflict, right? So इससे आपको मदद मिलेगी. You have to find कि क्यों हो रहा है conflict. What is the cause behind it?
right? Conflict होंगे life में? What do you think? Conflict होंगे life में या conflict के बगैर रह सकते हैं? Yeah, conflict तो है, life is rough, you know. No, conflict, you know, is if you do the course, know yourself, parts जो हैं, आप फर्क है, मैं फर्क हूँ, right? You're going to think something, I'm going to think it differently. I've got different experiences, different viewpoints. Allah Ta'ala ने मुझे फर्क बनाया है. I'm different. So of course there's going to be conflict. You're never going to match. It's part of life. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हैं. This is where you have to be strong. Now your question was, you know, at what point do you say it's not worth your time? And that we are covering. That we will cover. But we have to first identify causes of conflict. So causes of conflict में हम कह रहे हैं conflict होएगा. You can't avoid it. And you have to actually understand it's part of life. We are all different. And conflict is certainly going to be in the workplace. It's going to be in society. It's going to be in politics. It's going to be in the home. It's going to be with yourself as well. Your ability, आपने अपनी ability बढ़ानी है कि उस conflict को solve कैसे किया जाए. How do I do it in the best way possible? Without wasting time, without getting emotional, how do I do it? Right? So we are going to now go to the second lecture that we had and go briefly over it. This again I have covered, but I'm going to give you a little quick summary of it. That what we talked about, कि causes of conflict क्या हैं? And we talked about कि ये चार हैं. Value or interest का difference between people. What is that? We'll explain that. Power differences between people, इससे conflict पैदा होता है. Data differences से conflict पैदा होता है. And personality differences से. And the most important one, जो आपको समझना है, वो personality differences है. And that we spend the most time on, or आज का lecture भी, once we get to it, is more about that than anything else. So let's look at the values and interest का फर्क आप में और किसी और में. What are values? Values are about what you believe is right or important to you. और वो आपके behavior और आपके decisions को guide करते हैं, जो आप believe करते हैं. Right? So supposing one person believes in material wealth, another person believes in spiritually rising to higher levels. तो उन दोनों के values फर्क हैं. So आपका इन दोनों का behavior भी फर्क होएगा. They will choose different things. They will make decisions in different manners, right? उनको अपने बच्चों को differently raise करेंगे. अगर उनमें दोनों में एक का spiritual है कि मुझे रूहानी तौर पे I have to be very high and materially it's not important to me. Whereas the other person says everything is material. I have to get success. My whole success is material, wealth and property. So then you have a different value system. And based on that, आपके सारे actions or decisions होते हैं because of your value. तो इसकी वजह से, this is one of the reasons where your conflict will come about if there's a values difference. और दूसरा है interest का difference है आप में और किसी और में. You know, maybe you are a person who is very much interested in gardening, and somebody's very interested in traveling, and you married a spouse like that. You like to stay indoors, and your spouse wants to travel and everywhere. So वो interest का conflict भी आ सकता है आप में और उनमें, जिसकी वजह से conflict हो, right? But as we said, conflict is always present. It's a way of how do we resolve that conflict is what the whole series of these lectures is about, that we get to giving you the tools के इसको कैसे resolve किया जा सकता है. So let's see कि आपको इस पे कुछ देखूं कि आपको समझ आई बात कि नहीं, कि values और interest में क्या फर्क है. Let's see if you can do that.
Okay. Right on this one. Yes. Can you see it? Can you see this one? Okay. Good. करते जाएं. Everyone should attempt it. You know, it doesn't matter आपको गलती भी हो जाए. It doesn't matter. Just try it. Yeah. Do you have more people trying? Everyone can try. Yes. All right. I'm going to end it now. Or किसी ने try करना है? Okay, you're trying. Okay, go ahead. Anyone else wants to have a go? So conflict will not and should not occur in our lives. We are saying कि होएगा, conflict definitely होएगा. Conflict is a natural part of life, isn't it? Right? Conflict occurs because people are unique and different. What matters is that we deal with conflict, right? The last three आपके same. All right. So now we come to power differences. This is another reason for having conflict with people. This is a cause of conflict. So इसको थोड़ा cover किया था हमने last time. So what is power? Power क्या है? Power है जब किसी के पास authority है to control others, whether it's an ability or an influence, उनके पास कोई है जिसकी वजह से वो control कर सकते हैं दूसरों को, तो हम कहेंगे उनके पास power है. तो power की वजह से भी conflict पैदा होता है. अच्छा, अक्सर क्या होता है कि ये इतना ज़ाहिरी तौर पे नहीं होता. You can't see it. You know, जैसे if I'm a manager in a organization, I've got juniors, so then you can see it कि मेरे पास ज़्यादा power है, right? तो conflict पैदा हो सकता है because I have more power than someone else. But what sometimes that power is not identified or labeled like that. You can have in a family, you can have you know, the lady of the house has a lot more power than the man, so that would be there. They have more ability to influence, to control, and they have more authority, you know, or the man has it. So there are these. You can see it also. You know, in a family where you've got two brothers, and one brother has simply more power and influence in the home. And it's not identified like that, लेकिन वो underlying current है जिसकी वजह से आपको जाहिर होता है, उसको जाहिर होता है छोटे वाले भाई को या एक ब्रदर को कि इसके पास पावर है और मेरे पास पावर नहीं है, right? So that can also lead to conflict. Does that make sense? Yes, this is that we're covering this one, and जो आप बोल रहे हैं Azra, we're covering that one. So dynamic power dynamics जो है, dynamic का क्या मतलब है? It's something changing, and you know, it's got energy and it's changing all the time. So power dynamics change हो रहे होते हैं. They're changing in an organization, they're changing in a home, बदलते रहते हैं, you know. In some conversation, maybe you know, one person in the family has that authority and power, or फिर कोई और topic हो रहा है तो कोई और हो रहा है. It's like a power dynamic that you have to understand कि वो बदल रहा है. So it can exist in the form of formal authority, जैसे मैंने कहा आप CEO हैं या manager हैं, so then obviously power difference की वजह से conflict आ सकता है, expertise की वजह से आ सकता है, जो आपने अभी पूछा Azra. You know, you think that somebody else has got more knowledge and you automatically assume कि इसकी ability ज़्यादा है. You know, I was recently telling my staff, you know, when we were talking about it, that I assumed that the doctor had more knowledge and I gave him more power. You know, in my mind, he had more power, but when he let me down, I knew I shouldn't have done that.
So there was a conflict between me and him, but it occurred because I gave him that power of more knowledge without actually ensuring that he had that knowledge and he had that data, which I was saying I've got a conflict with what has happened. Does that make sense? So expertise pe bhi you can gain more power. अगर आपके पास wealth है, resources हैं, property है, again, you can have be getting more power, or you can give somebody that power. Relationships में भी आपका power का dynamic आ जाता है. एक बंदा है जो बहुत influential people को जानता है, आप automatically उसको power दे देते. आप सोचते हैं इसके पास power है, मेरे पास नहीं है, मैं कम हूँ. Right? And then you, in our families, in our culture also, we see के birth के order पे बड़ा बेटे को या बड़े son को, he has somehow more power, and the younger ones can feel कि ये power conflict है. इसको क्यों ज़्यादा power है, मुझे नहीं है. मैं कौन सा, मैं भी तो लड़का हूँ, मैं भी तो नहीं, मेरा भी तो माँ बाप वही है, right? So it can exist because of that. It can also exist because of gender, in our families. Sometimes the boys, or quite a lot, the boys are given more importance. So the boys don't have to work and the girls have to do all the housework. So that kind of thing can also bring about a power conflict in a family where the girls thinks, well, why am I treated like that? It's not really fair. So वो बात मुंह से नहीं निकल रही है, लेकिन it's an underlying current जो है वहां पे. So ज़ाहिरी तौर पे आपको नहीं दिखेगा कि ये upset क्यों हुआ. Somebody had an outburst and they shouted, आपने कुछ बोला, भाई वो प्लेट उठा के मुझे दे दो, एकदम से भड़क गई आपकी बेटी. Why? And because there's an underlying thing of power conflict. Why didn't you ask the son? Why did you ask me? But she doesn't even realize it कि ये underlying current चल रहा है, and she has an opposition towards that. Or cultural expectations may be power conflict आ जाता है. Sometimes you give an elder much more power than they, and you don't resent it as well कि ये इनको क्यों इतना power है, something like that. And also personal attributes की वजह से आप किसी को, somebody is very, their personality is very shining, they connect with people very well, they make everybody laugh, तो उसमें भी आप power अपना दे सकते हैं, and you can have a power conflict and feel resentful. So what are we learning from this area? कि अगर आपके पास power है, supposing you as the senior person have the power, तो आप पावर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द? You should respect the rights of others. उनको rights दें, उनको respect. That's how you will reduce the power conflict around yourself. So अपने घर में भी, give everybody rights, respect everyone, and your power conflict का dynamic जो है वो थोड़ा stable रहेगा, conflict कम होंगे. और अगर आपके you're in a position where you are giving other people power, so you need to question yourself कि आप क्यों कर रहे हैं ये? Are you doing it because you're competing with them, or आप resentful feel कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा आता है, मुझे नहीं आता, मैं कम हूँ? So don't do that. Don't compare and don't compete. You're unique. उनको आप value करें for what they know, and you value yourself for what you know. तो वो power dynamics को थोड़ा सा conflicts को आप कम करेंगे अगर आप अपनी सोच को देखेंगे कि why are you getting upset about this thing? So keep an eye on looking after others, कि उनमें आप power conflict नहीं भेज रहे, by respecting them and giving them rights, and then on yourself आप खुद compete या compare ना करें. Don't do that. It's not good for you to compare yourself with other people. It's not, you're made unique. You carry your journey out and you become a better person. You carry on that journey and you value other people's की अच्छाइयाँ, उनको value करें, उनको भी help करें अगर उनमें कमी है, और अपने खुद को भी grow करें उसके through. Does that make sense? Does that make sense? कोई इस पे question है या quiz दूँ? Does it make sense? Any questions? Yeah.
मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा था, आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ पावर होता है. आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट पावर की वजह से नहीं होता, व्हेन समवन एल्स यूज इट्स पावर इन अ रॉन्ग वे, सो देन दिस कॉन्फ्लिक्ट हैपन. लेकिन जब आप एक फ्रेंडशिप में होते हैं, एक जॉब पे होते हैं, एक घर में होते हैं, तो जिसके पास पावर है, अब उसको मोरालिटी का पहले लेक्चर दूं, उसको कोर्स ऑफर करूं कि एम्पैथी लर्न करो, ताकि तुम मुझे, जो मेरे पास कम पावर है, मेरे साथ एक उस तरह के एक मोरालिटी वाले एनवायरनमेंट में आओ, या आप सीधा मुझे ये कह रहे हैं कि भाई खुद ही पावर ले लो, देन यू कैन compete with power to power. Okay. So what we are saying is कि power dynamics exist करते हैं, जैसे आपने कहा कि कोई powerful है, you know, and I'm saying if you're powerful, give other people rights and respect, so that उनमें ये conflict पैदा ना हो, ठीक है? और अगर आप हैं तो आप कंपेयर और compete ना करें, सीनियर जो भी बड़ा दूसरा आदमी है उसको ना आप अपने दिल में resentful feel करें उसके पावर की वजह से या whatever he has. You're unique, they are unique. So then यानी कि उसकी पावर को मान जाओ फटाफट के, हाँ ये मेरे नहीं, से अपर लेवल पे है, तो आई हैव टू बी डाउन, दैट्स no, इट. no, I'm not saying that. I'm saying that when you're talking about a situation where somebody is exercising their power without giving you respect and without or taking away your rights. And I'm saying that that will create a problem, right? Do you agree? Yeah, with yeah. That is what you're telling me. And I'm saying that will create a problem. और वो आगे जाके हम personality difference पे आ रहे हैं. You are not going to give them a lecture. It's going to make no difference to them if you give them a lecture on morality and what is right and wrong. You know, it's not the thing to do. All I'm saying is, from your perspective, आपको क्या करना चाहिए? When you have power, you respect everybody and you give them their rights. And when somebody else has power, like he's your manager and everything, or he's somebody is there, you don't compare and compete and get yourself in a situation where you have a problem with their power. You know, they might not have that power anyway. You're giving it to them. Right? I gave you. Can you explain this one, this thing, because the second time you are repeating that they don't have power. I am giving them power. How I am giving them power? Because ye understood hai कि I don't have power. That's why I'm asking this question, and someone else have got the power. So this is the scenario. How I am giving power. For example, दे रही थी डॉक्टर के पास मैं गई, you know, and he has power over the patient, right? Over my husband. He's in the hospital. So I gave him the power that he knows better, right? And I put myself down that I don't know. And that was my error. I, as a person, as a wife, have rights. I should have been told some things which I wasn't told. And I expected him to do something in that situation, and he didn't do it. So I took a lower position, and I corrected myself soon after that, and I took my power back. And I said, you need to be answering my question as inpatient care. I, as a wife, need to know this. So मैंने उसको शुरू में जो power दे दिया वो मेरी गलती थी, because I assigned him a position that he only has when he's on the operating table, and I was getting confused in what I was asking him. उसको वहां पे तो पूरी पावर है कि अपने ऑपरेशन थिएटर में उसको जो जी में आए वो करे, लेकिन when he's talking to me, he's got to be respecting me and my rights as a wife. Right? Does that make sense? कि मुझे अपने को कम नहीं करना है. Of course, he's a doctor. He's got his position. I respect him for that. He's a surgeon. He's qualified. But he doesn't have the power when he talks to me
and he's got a duty to inform me correctly about what the situation is. Does that make sense? Yeah, makes sense now. Okay, good. मेरा एक क्वेश्चन है कि हम पावर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या हम रिस्पेक्ट से ओवरकम कर सकते हैं? You know, you definitely got something that you want an answer to, and it really depends upon the personality. जो हमारा fourth area है cause. You have to understand the personality in order to understand कि आपने कैसे इस problem को solve करना है. Some personalities you will not be able to make a difference. Some personalities you solve हो जाएगा with respect. Does it make sense? So understanding हमारा lecture का नाम Yes. predicting behavior. Once you know that, then you are in a position to decide कि इस situation में मुझे क्या करना चाहिए. Whether it will work, whether it will not work, what will work, you know, you can decide that. और वो उस journey पे हम आपको ले जाएंगे that you can predict what kind of behavior to expect from people at different levels. Okay? Is that all right? Yes. Okay. So I think we had a quiz here. Did we have a quiz? Power Pitha. Is it there, Sister Shazia? Yes, yes. So this is on power differences. What would you say? What would you say to this one? और लोग भी participate कर सकते हैं. Let's see if ये point है, and then this will be the point at which we stop. I think Sister Shazia, Sister Farhana, you agree? Yes. Yeah. And we'll carry on inshallah next time. Sister Aisha, is that okay? Yes, ma'am. All right. Any more people can say power difference, major area hai power difference ka. It exists in the homes, in the workplace, in society, in politics, in businesses, across nations, power differences are there, you know. So it's very important to grasp this, और हम ही उसको power दे देते हैं जहाँ पे power देनी नहीं चाहिए. And then we sit back and say, grumble about it. So, okay, good. I'm going to end the poll there. So your answers are, power conflict is often hidden beneath the surface of many interactions. That's true. Power conflict happens especially when basic rights are denied. Power conflict happens when respect is not given to others. Right? So even if it's a CEO at the top level, if he's giving respect and human rights, relationships sahi rehte hain. You know, if he's doing that. But if he stops doing that, then it creates more major problems in the organization. Okay, so this is the point at which we have to cover two other areas. You know, we've done values, interests, we do data differences and personality differences, inshallah, next time, and then go on to predicting about human behavior. So if there's, over to you, Sister Farhana, any questions or anything that anyone has, then we can wrap it up so that we don't exceed our time limit. Jazakallah khairan, Sister Paida. So go ahead, please. आप लोग hand raise करें, and you know, questions you can go ahead and ask any questions you have. I know this is, you know, a lot of you know, it's thought provoking. I think this has to be reflected upon. ये जो topic है, you know, power का, especially, you know, you have to really see. And so Paida, the one question which comes to mind is, you know, when we sense, and I think this is very subconsciously done too, right? The power difference जो sense हो रही है and जो irritation अंदर create करती है,
Is it a subconscious process, or I mean, how much you have to put in some awareness and reflection to figure this one out? Yeah, I mean, most of the time we're not aware of it at the start, but one should reflect. And I think that's why, you know, the जो हमारा course है, Know Yourself, it helps you to identify the belief system behind it, behind क्यों आपको ये feel हो रहा है. And then it gives you the tools कि भाई कैसे इस belief system को change किया जाए ताकि आप अपने full potential पे पहुंचे. So very necessary कि कोई भी upset जो the whole course is designed कि आपको कोई भी upset होता है ना उसको एक नेमत समझे. Because it's an opportunity to clean yourself up and make yourself pure. Allah Ta'ala bless करते हैं, you know, He expects us to return to Him pure on the Akhirat day. That's what He's asking us in the Quran. And these little things जो होती हैं life में, छोटे upsets होते हैं, बड़े होते हैं, they are an opportunity to clean ourselves up. And we give you the techniques of how to handle that upset within yourself कि आप spiritually rise करें. Yeah. Yeah, absolutely. I think subhanallah. So I mean, you know, I think the initial जो feelings आती हैं मेरे ख्याल से it's more of a even before you realize that conflict is going on, आपको the feelings are kind of going to be your red flag कि you're not feeling good, you're uncomfortable, you're getting irritated, you know, tension जो आपने कहा, the first level of conflict, वो tension को जब feel हो रहा है, then we should pause and reflect and figure out at that time. तो इसको हम lightly avoid करके उसको just brush off ना कर दें. But okay, that's absolutely. So yeah, any uncomfortable feeling which is coming is for a reason, is an opportunity, as you very well put it, कि इसको use करें कि what is going on, there's something amiss. Yes. Yes. Yeah. Jesus to Javeria. मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या ये मौका हम दूसरों को भी दे सकते हैं जानबूझ के करके? Yeah, बोला Sister Javeria, I didn't get it. मैं कहा क्या ये मौका हम दूसरों को भी दे सकते हैं तंग करके जानबूझ कर? What do you mean? कि वो अपने आप पे मतलब थोड़ी मेहनत करें. अच्छा, दूसरों में टेंशन क्रिएट टेक्निक करना तो है सिखाए ना पहले, नो योरसेल्फ का कोर्स तो करा दे पहले. हाँ, क्यों हाँ उनको ना, उसके बाद upset देखिए हम करते गाइडेंस भी हो? तो दे सकते हैं उनको कि भाई आप डू योरसेल्फ का कोर्स करें, देन अगर इससे अंदर की टेस्ट करना आप चाहते हो? हाँ, हाँ ओके. अच्छा मैम, फरीदा वैसे तो ये तो मजाक था. जनरल क्वेश्चन मेरा ये था कि समटाइम बहुत अपने अजीज जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि बंदा करके इसको यार कमरे में बंद कर दो पकड़ के मतलब कि इतना तंग करने लग जाते हैं. एकदम से अच्छा खासा बंदा होता है लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये कौन से एंगल से आ रहा है. You तो mean at times कोई unpredictable behavior कर रहा है, ये कह रहे हैं Sister Javeria? जी. Okay. All right. So what is your question? ये कि मतलब उस वक्त मतलब सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए. मतलब आप जैसे अब आप एक जानते हो एक पर्सन है, वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी का है, रहमदिल है और बहुत वाइस है, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो जो है बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड शो करते हैं. हाँ. हाँ. तो You know, I mean, we are all human. We are all human. And there is a shaitan. राइट. You know, and it just, you have to let it go. You have to keep control of yourself. You know, आप मुझे हिम्मत दें, आपको नहीं उसको कमरे में ही बंद करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. you know, I think they probably need you more at that time than any other time. अगर आपकी presence बिल्कुल calm and, you know, powerful and Allah से connected हो, it calms them down. उनके इर्द गिर्द भी बहुत vibrations or emotions and everything is there, and just your presence of calmness brings the environment into calm. You know, आपका यही होना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला मुझसे खुश हो इस वक्त कि मैं इसकी मदद करूं, and अल्लाह ताला मेरी effort देखें. I will not lose my cool. ये आपका, you know, always try and do that you raise yourself spiritually and become more able to help other people come face their issues
you know, and they will be attracted, Sister Javeria. वो attract होते हैं कि आप कैसे कर लेती हैं, मुझे भी बताएं. You know, they will eventually come to you and ask you. So, you know, you don't drop your standards to बंद करते वाला. सही हो गया. लेकिन अच्छा इसी बात पे जो सिस्टर कह रही हैं और आप भी कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा बिहेव कर लें, चुप कर जाएं, उनको दिखाएं कि हम बड़े हाई स्टैंडर्ड के हैं. डोंट यू थिंक कि यही एटीट्यूड किसी दूसरे शख्स को, जो हमारा बॉस भी हो सकता है, मैनेजर होगा, कुछ भी होगा, उसको ज्यादा पावर दे रहा है और वो इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि आई थिंक शी इज नॉट गेटिंग माई पॉइंट एंड ही इज गेटिंग बिगर एंड बिगर, गेटिंग मोर पावर. I think, you know, you have to eventually decide whether the relationship is worth, you know, if he's going to change or not change, or उसकी intention or motivation क्या है. वो आप जब personality differences पे आएंगे ना, तो आप judge करेंगे. You will be able to judge whether it's worth investing in this person, whether this person is actually going to listen to you. You know, without collaboration, communication, कोई चीज solve नहीं होती. If he's not going to do that as a manager, he's not a very good manager then. You know, he's just not. So you have to take that, understand personalities, जो हम next वाले section में करेंगे इंशाल्लाह, and then you decide, you know, what is the best way to proceed, इंशाल्लाह. लेकिन मैम फिर एक वक्त फिर ऐसा भी आता है कि आप मतलब वो कर करके ना कि मतलब सबमिशन कर करके कि नहीं यार जाने दो, कोई मसला नहीं. लेकिन ऐसे होता है कि अंदर से आपके वो जो है ना एट लगने लग जाती है. एट मतलब कि आप रुकने लग जाते हो कि नहीं अब इसकी नहीं माननी नहीं है, जो मर्जी हो. लेकिन ये कि वो टेंशनली नहीं होता, लेकिन ऐसे होता चला जाता है. मतलब मिस्टेक पे मिस्टेक होती है. मतलब I'm not saying कि बर्दाश्त करते हैं. I am not saying that, Sister Javeria. I'm saying कि आप प्रॉब्लम को देखें और उसका solution निकालें. But you can't analyze it until you analyze the personality and identify them. And then you have to also request them to improve the situation and work together on it. You know, so bardasht karna is not the solution. You know, that's helping them, it's not helping you. It's just making a situation worse, isn't it? So inshallah, you know, with the further lectures you will be able to. Prana, you want to say something? Yeah. I think this is exactly, I think, where there was some misunderstanding key when you said that, you know, we, don't compare and, get into the power conflict. I think the assumption here is that we kind of just submit ourselves to their rights, their wrongs, mainly, especially right with it. But that's not what Sister Faida is actually saying. And inshallah, we will, jab tools mein jayenge, I think we will definitely be learning how to, approach them. But before doing that step, what we need is we need to know unki personality ko hum sahi tarike se we know, taki we can pick the best way to assertively, correct them. So that is there. So I think the assumption has been made here, ki, just okay, we let it go. No, that's not the case. No, the whole end goal hamara to fix the conflict here, right? So remember that. So we're not talking about just identifying and letting it go. So that's going to be coming. That's going to be coming. So inshallah. So just wanted to stress on that point. Ki, it's not just saying that you submit to the power. So the other question was, in case I am creating a power conflict with someone else, but I'm not aware of it. How do I? What is it possible that I'm not even aware that I'm doing this on someone someone else? How important is the role of feedback, or how do I get the cues that maybe I'm doing, or how much should I be reflecting on myself and my character? कभी भी in conflict हो, कभी भी आप tension तो sense कर लेते हैं ना इंसान. So then you have to look at what is it? What have I done? What have I said? What have I conveyed? What have I not conveyed? कभी होता है हम convey ही नहीं कर रहे जो हमें convey करना चाहिए था, बताना चाहिए था. So why has it resulted in this? So it's always a question like, point the finger at yourself first and see, well, what is it? What is it that I could do better? Then why did he think like that? Why did he think that? So insan apne ko improve karta hai, and then, and you make a difference in their lives too, and they also learn from what you're doing. Inshallah.
क्या तो अच्छा इस पॉइंट पे आपने हमें रोक दिया है कि काउंटर पावर एक्सरसाइज नहीं है भी करनी, we need to learn about personality first और उसके बाद डिसाइड करना है. So अच्छा what's gonna be the next follow up session? When it's gonna be? Well, we're doing one on Thursday, and we'll continue on, sister, we'll continue on till we finish this area, till the tools. We want to do that. It was supposed to be faster than, we intended to do this, लेकिन लोगों ने किया ही नहीं हुआ था Know Yourself के कोर्स. अभी किया हुआ है ना तो ज्यादा फायदा होता है. तो जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट ऑन इट. तो इस सेशन से भी आपको ज्यादा फायदा होगा. You will understand your relationships better. अच्छा मुझे कोर्सेज का आपने 2-3 दफा जब से सेशन स्टार्ट हुआ है यू मेंशन इट, थोड़ी सी मुझे क्या थोड़ी लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर हम कोर्स वो ले लेते हैं तो बच्चों के साथ कितना मुश्किल हो जाता है कि आप एक कमिट कर लें कि आपको इतने लेक्चर्स लेने, इतनी वीडियोस. तो ले पे अगर थोड़ा सा बता दें कि अगर मैं कोर्स पिक करती हूँ तो व्हाट्स गोना बी द प्रोसीजर, कि कितना इसमें स्टडी है और कितने इसमें एग्जाम्स वगैरह क्या है, इज इट इजियर और व्हाट? Very easy. It's extremely easy. You go on there, you read, half a page of data. You do a quiz. सब अपने टाइम में करें आप, right? And then you read another little theory, और उसके बेसिस पे आप quiz, आपको practical application के quizzes हैं कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे उसको. इस किस्म के quizzes हैं. और फिर आपके इस तरह से आप चलते हैं. Even if you give it half an hour a day, आप आराम से निकल जाएंगे. And you will learn so much. So, right. कुछ कहने लगे थे आप? So I just wanted to, clarify amount there. So basically, the first course है, जो control का course है, the amount of reading is probably maybe 2 pages, 1 to 2 at the most. That's it. उतना ही है. So it may take at least 10 minutes, to read. It's about उसके बारे में सोचना, उसको समझना. That is what is there. And then उसकी जो quiz है, it's very very enjoyable. वो इतने practical quiz होते हैं, just kind of a little sample of what we saw, but more practical examples के quiz होते हैं. It's fun to do that. The first course, should not take more than 30 minutes of your time. First वाला जो course है. Second course is divided into lessons. I'm not sure exact number, 5-6 lessons. Each lesson probably will not take more than half an hour. So I think when course जब कह रहे हैं, people are just going into books and long lectures and series. Subhanallah, this is very 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 minimal. इतना minimal amount है. It is about हर चीज को आप सोच के उसको apply करें. So it's not about reading material ज़्यादा नहीं है. उसको समझ के उसमें implement करने का काम ही है सर. So it's very small, very very small. Please read it. Please read and check it for yourself. Yeah. जी सिस्टर जुबी. जुबी had it. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. हाँ वो बात तो कहीं से कहीं निकल गई. मैंने हैंड रेज किया था कि वो एक अभी खातून कह रही थी कि मतलब आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ कैरेक्टर लोग करना शुरू कर देते हैं, तो उसको किस तरह डील करें. तो उस पे एक तो मैं कहना चाह रही थी कि इसके लिए एम्पैथी की असल में जरूरत है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर कोई आउट ऑफ कैरेक्टर कर रहा है किसी बिहेवियर तो उसकी जरूर कोई वजह होगी. एक तो होता है ना लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, वो तो एक और बात है, वो हमेशा वैसी करते हैं. लेकिन अगर कोई बंदा आउट ऑफ कैरेक्टर कर रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई रीजन होगी, तो उसको समझने की और उसको उसके साथ एम्पैथेटिक होने की जरूरत होती है. तो ये मैं इंस्टिंक्टिवली बता रही हूँ, मैंने आपका कोई कोर्स किया नहीं है और ना ही मैंने ये अभी वाली सुनी हुई है. Empathy is a very very good quality and we should always be using that. It's absolutely right जो आप कह रहे हैं. Absolutely right. और एक ही बात हुई थी कि कॉन्फ्लिक्ट जब हो जाता है ना, तो कन्फ्रंटेशन से जो मैंने देखा है ज्यादा खवातीन स्पेशली कन्फ्रंटेशन से बहुत घबराती हैं. तो पहले ही आपको अपनी लिमिट्स जो है उनका पता होना चाहिए कि क्या चीज मेरी लिमिट के अंदर है. एक तो होता है कि लोगों की आदतें होती हैं मुख्तलिफ तरह की और आपको बहुत सारी चीजें इग्नोर करना पड़ती हैं आसपास जो भी लोग होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है. तो क्या मैं खुद पर्सनल लाइफ में जिस तरह करती हूँ वैसे ही है कि अगर मैं इग्नोर कर सकती हूँ किसी बिहेवियर को तो ठीक है, वेल एंड गुड. लेकिन अगर मुझे पहले ही पता है कि मुझसे ये चीज इग्नोर नहीं होगी, ये बहुत उससे ऊपर की बात होगी, ये क्रॉस हो गया, तो फिर उसके बाद कन्फ्रंट करने के अलावा आपके पास मतलब आप जो है वो मुनाफिक होंगे अगर आप कन्फ्रंट ना कर रहे हो. अगर आप ट्रू टू योरसेल्फ होंगे तो फिर आप कन्फ्रंट करेंगे, फर्ज हो जाएगा फिर आपको कन्फ्रंट करना. तो इस तरह आपको अगर आप अपनी लिमिट्स का पता रखें
और अपने हुकूक और फ़राइज़ दोनों का पता रखें, तो फिर आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि मुझे कहाँ पे कन्फ्रंट करना है और कहाँ पे इग्नोर करना है। Very nicely put. Thank you, Sister Zubi. लेकिन मैं यहाँ पे सोच रही थी अगर सिचुएशन एस्केलेट कर जाए तो आगे चलने, Sister Javeria, just learn more about personalities, then you know what is the limit of what you say and what you do not say. You know, तो yes, you're right, escalate हो सकती है, लेकिन जब आप personality को पहचान लेंगी ना, तो you will also come up with a strategy of what to say and how to say it, so that you're not pushing them into more escalating the situation, inshallah. सिस्टर रूबी से पूछना चाह रही थी कि आप कर रही हैं कोर्स पे स्टार्ट हमारे साथ? How many people are starting course? Sister Shazia wants to know, and Sister Aisha. Hands up करें जो course शुरू करना चाहते हैं. Who cannot wait to start course? मेरा ख्याल है आयशा को मैंने मैसेज किया है, उम्मे कुलसूम को किया है, इन दोनों के अलावा Anybody else wanting? या आपको नहीं हम attempt कर सके? आप मुझसे पूछ रही हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैं फिलहाल जब तक ये स्कूल जो है वो छुट्टियां हैं ना उनकी, तो उस वक्त तक मैं क्योंकि करवा रही हूँ कुछ काम बच्चों को, तो इसलिए मेरे पास अभी टाइम नहीं। मैंने एरोबिक शुरू किया हुआ है ना सोर्स कोर्स पे, तो वो उसमें भी टाइम लगता है, तो इसलिए फिलहाल वैसे ये कि मैं आप कोर्सेज करवा रही हैं, ये तो एक बाकायदा वो होता है कि क्या कैसे है, ये टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं, वो सब कुछ उसका अपना फायदा होता है। लेकिन ये काम जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये काम मैं पहले ही करती हूँ अपने लेवल पर, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जो भी लोग मुझसे इन टच हैं, मैं Good. उनको बहुत सालों से ये सब सिखाती रही हूँ। मतलब अपनी इंस्टिंक्टिवली ही जो चीजें मुझे, क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे ठीक जो लगी हैं वही असल में ज्यादातर अगर आप साइकोलॉजी का और वो पढ़ें तो उसमें वही चीजें नजर आती हैं। तो एक तरह से इंस्टिंक्टिव, मतलब मुझे तो कॉमन सेंस लगती है ये चीज कि आप इसके अलावा इस सिचुएशन में और क्या करेंगे। तो करते भी हैं खुद से लोग मुझसे कांटेक्ट, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और मैं इस बारे में सिखाती रही हूँ। तो हाँ, कोर्स से मुझे यकीनन और भी फायदा होगा अगर मैं कोर्स करूँ तो इंशाल्लाह। लेकिन बस फिलहाल जरा ये बहुत सारे काम इस तरह चल रहे हैं ना, उसके बाद इंशाल्लाह, ताकि मैं अगर शुरू करूँ तो कर भी सकूँ ना उसको कंटिन्यू आगे। Thank you, Sister Zubi. It's सिस्टर wonderful. समीना, अच्छा काम कर रहे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम। आप तो ऑलरेडी कोर्स पे हैं, आपका कोई क्वेश्चन है? जी नहीं, मैंने कहा था मुझे दूसरे कोर्स पे डाल देना, साथ में वो जो कंट्रोल कोर्स है ना पेरेंट कॉलेज, जी प्लीज उसके अंदर मुझे आप ज्वाइन कर लेना। कंट्रोल कोर्स में तो आप ऑलरेडी हैं। अच्छा, उसमें हूँ मैं जी, चले ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वही मैंने जब कहा आप शायद जी वो फिनिश करेंगी ना तो फिर आपका नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। Good. I think we should wrap it up. Sister Fana, what do you think? Yes, inshallah. Okay. Jazakallah khairan again for your precious time, and may Allah subhanahu wa ta'ala help us, ilm hasil kar rahe hain, to apply and to, make ourselves better, and everyone else around us better. And again, not limit to just improving, and then we, in fact, Survey once we form improve, we did need to be. Sister Shazia. Survey form. Sorry. यस, पिन शेड, या Yeah. Please, आप लोग हाँ survey form क्या please कर आप दिया? feedback दें, so we can improve. Yes. So again, the goal of these courses is to improve ourselves to our highest potential, and then start contributing to the world. That is our objective. So please, this is to fill our gaps and fill our own personal areas where we need to improve. So inshallah आप अपने circles में, friends में इसको ये videos भी upload हो जाएंगी YouTube पे. Please forward this as well, so people who cannot attend, they can listen and come on to the courses as well. So jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاkallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।